Yeah. Welcome to the session, ma'am. Thank you Uh, so much. so this session is brought to you by a great Indian book author, and it is the one-stop solution for all the publications. And let us start the session as sir has already introduced both of us. So, ma'am, you are like so versatile. You are a clinical nutritionist also, and you are Yeah. an author, and you are international skin specialist also from Canada. So, like, my first question is like, share us your journey as an author. Okay. So you mean how did I like step into this Started journey? writing. Okay. Yes, yes. So my author journey was like it was not by choice. It was by chance. You can say that. Actually, in 2017, I lost one of my very close friends, Sakshi. So her husband gave me a diary. Like she used to write a diary. Sakshi and I stayed in Delhi together for some time, like in around 2016, 2015. So when she took her own life due to sexual exploitation at work culture, so then her husband gave me her diary. So then I went through that diary, and then I decided to write a book about it. Obviously, after when her husband gave me the permission to write about it. So that was my like by chance. Though it was not a fortunate incident, but yeah, that time I took a decision to write about it because that's very common in India. At Yes. that time, I'm talking about 6 years back, though it was not that obvious, but now these days, because call center culture is coming, like 24/7 girls are working, and it's getting a little unsafe also. So that time I wrote about her story just to create awareness about like one should be aware about the surroundings. Women should be aware about the persons whom they are working with. So just to create that awareness, I write like I breathe. I wrote I breathe last for you in Yes. 2017 that got published by Tellville, Vancouver. Yes, ma'am. I read it, and I also went through your profile. You have been felicitated by many awards in your like Yeah. professional career as well as an author. So, like, Mhm. I Breathe Last for You was like a romantic novel, and the second book which we are talking about, like The Mhm. Purple Couch, this is Mhm. like entirely different. It is from a different genre. It is on social cause. So, Yeah. like, there is like what triggered you to write such book? The Purple Couch. Uh, Shika, even the first book was for the social cause. You can say Social that cause. because Okay. even that is also prevalent in our society. That exploitation thing. Mhm. This book, like fell into my lap. Fortunately, I should say that I'm an like advisor to an NGO in Hyderabad. So when COVID came, I visited India in 2020, and I visited that NGO in Hyderabad. So some people from LGBT communities were there. They were visiting their NGO, like the NGO which I am working with. So there I met my protagonist Tina. So she just I don't know, she got an idea through my first book. She read my first book, and then she shared her story with me that she's a bisexual woman. And see, it's not about the bisexuality, but it was like I was really shocked. Like, how can someone be like for the 50 years she was struggling to get like she was like struggling for her gender identity crisis, you know. She was struggling for her acceptance in the society because she is a bisexual woman. She herself was not accepting it for the 50 years. Hmm. She told about her this thing to her family when she was 50 years old. 50 years. So yeah, and when I heard about the struggles, her like journey, molestation cases, because people started taking advantage when they came to know she's a bisexual person, just to Yes. hide her that personal thing. She like allowed everybody to to take advantage of that thing. So that Yes. like triggered me ki I should write about it. I should write about this. I couldn't write about the whole community because that was a bisexuality thing, but I could easily imagine that any person who belongs to this community,
may have to pass through all these kind of struggles, exploitations, molestations. So then I decided to write about it, the Purple So मैम Couch. like बहुत सारे challenges भी होंगे while writing the book. You must have faced from the publications Mhm. also and from family, friends, and relatives also. Like they must be asking, Uh, why do you want to write this kind of book? बहुत I mean, मुझे ऐसा मैंने ना जेके रॉलिंग का पढ़ा था ना कि उसको 9 रिजेक्शंस मिले थे, 9 rejections, तो आई right, थिंक तो right. मैंने मुझे लगता है मैंने इनडायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कर लिया होगा, बिकॉज मुझे इफ यू जस्ट टॉक अबाउट पब्लिशिंग थिंग, so so many rejections, and it was like it's a really nice story, very well written, so, but we cannot publish it because it's such a sensitive topic, Sensitive topic, you know. right, right. So it could create any issues to our that that social stigma kind कि हमने ऐसा कुछ publish किया. But thanks to the Great Indian Book Tour, Mr. Prashant Gupta, Holistic Publication House, I mean, they really liked it. They appreciated it, and they encouraged me. You should. I mean, you have written about it. That's a very big thing. So finally, I got a very nice publisher. And yeah, of course, while writing also, I have to pass through many like tests and trials. Initially, when I told about it to my parents, I'm going to write about this, and they were like, "कि ऐसे कैसे आप किताब किसी के भी बारे में लिख सकते हो ना?" फर्स्ट रिएक्शन होता है पेरेंट्स, बिकॉज उनका एक अलग माइंडसेट है ना कि 75-80 इज ओल्ड पेरेंट्स, उनका वो तो ऐसा कुछ सोचते भी नहीं कि ऐसा कुछ मतलब ऐसा हो सकता है, एग्जिस्टेंशियल भी है, कुछ ऐसी existence. चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं। दे आर लाइक कि उसको कोई मेंटल इशू हो सकता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है कुछ। सेकेंड थिंग कि लाइक आपके अपने करियर पे इफ यू आर राइटिंग सच टॉपिक्स, you are not easily acceptable to everyone, right? So आपकी ऑडियंस भी बहुत लिमिटेड हो जाती है, पीपल ऑल्सो थिंक कि इस तरह की बुक है। सो कई तरह के चैलेंजेस आए, कई तरह की एप्रीहेशंस आए, बट या माय इमीडिएट फैमिली, माय हस्बैंड, my both kids, they both are teenagers, 22, 16, and because I live in Canada with my kids, so they were open to this kind of concepts. They like really encouraged me कि mom, you should write about it, because उनके classmates हैं ऐसे बहुत सारे, and they know this is a natural thing. So then Right, right. मेरे को like honestly speaking family support ने ही मुझे इस book को मतलब accomplish करने में, आप कह सकते हैं, my victory is just because of my family. Yeah. मैम लाइक फिर आफ्टर व्हेन इट गॉट पब्लिश तब क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली का एंड लाइक ऑल योर फ्रेंड्स, देन हाउ डिड इट टेक? ये ना जो बुक का टाइटल है द पर्पल काउच, इसका मैंने जब प्री लॉन्च किया था, जस्ट एक नॉर्मल सा एक ड्राफ्ट वो कैनवा पे जैसे बनाते हैं ऐसे ही जस्ट प्री लॉन्च किया था अपनी डॉटर के बर्थडे पे। सो द पर्पल काउच नेम जो है ना, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया अच्छा कि लगा, व्हाट इज यस यस पर्पल काउच। तो यस। पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि क्या चीज है पर्पल काउच, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, एंड अबाउट धीरे इट, यस धीरे यस। होता है। आई मीन एलजीबीटी कम्युनिटी, इट्स लाइक अब हम लोगों को काफी अवेयरनेस है इसके बारे में, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता गया, और पीपल वर लाइक ईगरली वेटिंग टू गेट दिस बुक कम इनटू द मार्केट, because it took 1 year. I took 1 year to write it. It took 1 year to get it published, because 9 months का तो मेरा waiting नहीं चला आने, because I came to India to get it published. So 9 months approximately मुझे wait करना पड़ा. So December 17, 2022 में publish हुई, तो अभी मुझे बहुत अच्छा response आ रहा है, like मुझे काफी लोग जो हैं encourage करते हैं, बाहर से बहुत लोगों के emails आते हैं, they are encouraging me कि I have written about this thing. Mostly एप्रिशिएशन ज्यादा मिल रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा कुछ क्रिटिक्स नहीं मुझे मिल रहे अभी। मैम दैट्स वेरी नाइस, बट जैसे इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडियन सोसाइटी में लाइक वी आर मॉडर्नाइजिंग, बट स्टिल ये जो चीजें हैं थोड़ा सा पीपल दे हेजिटेट टू टॉक अबाउट। और जैसे आपने बच्चों का भी बोला कि इफ दे आर टेकिंग अ थेरेपी और ऐसा कुछ, मतलब इफ दे वांट टू टॉक टू देयर पेरेंट्स आल्सो, तो वो सप्रेस हो जाता है कि नो देयर इज समथिंग रॉन्ग, और हाईलाइट हो जाता है कि व्हाई दे आर टेकिंग अ थेरेपी और व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट इट। मतलब लोग तो जैसे बात ही नहीं करना चाहते, इवन दो वी आर लाइक वी से दैट वी आर मॉडर्नाइजिंग,
बट देन लाइक व्हाट डू यू थिंक कि पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, इस चीज में? सबसे ज्यादा, बिकॉज फैमिली तो सी एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। सो सबसे पहले जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है वो जो पेरेंट्स हैं, लाइक यू नो, वो सबसे फर्स्ट है उसके सपोर्ट सिस्टम। इफ दे एक्सेप्ट इट कि ओके हमारा किड ऐसा है, राइट, तो ये तो सबसे पहली एक्सेप्टेंस, पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस। तो एक नॉर्मल चाइल्ड, मतलब जो एक नॉर्मल मेल फीमेल जेंडर है, एंड उनके लिए भी कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। तो जो लोग थोड़ा सा अलग है, स्पेशल हैं, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज दे नो कि वी आर डिफरेंट, राइट। स्टिल अभी भी दे कांट से वी आर यूनिक, दे से वी आर डिफरेंट। सो डिफरेंट। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, अपना खुद को एक्सेप्ट करना, जो सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है। राइट when you राइट accept yourself gracefully, then you give other also, you know, the perspective to treat yourself. How do you want to be treated by, you know, treated you? So you give them कि आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ डरा हुआ सहमा हुआ सा बच्चा कि ओह मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ, नहीं नहीं मुझे बाहर नहीं आना, तो लोग भी आपको राइट ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो अपने राइट आप को सबसे पहले करेज होना चाहिए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, यू शुड फील कि हम, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ऐसा नहीं कि हम में कुछ बाद में कुछ ऐसा कुछ, यू नो, लोग कहते हैं कुछ कर दिया या कुछ जादू टोना कर दिया तो हमारा बच्चा ऐसा हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग बोलते हैं बच्चा बाहर पढ़ने गया था, गे बन के आ गया। सवाल है दिस इज क्या? समथिंग आई, ये क्योंकि बिकॉज मैं रहती हूँ बाहर, तो बाहर राइट पढ़ने राइट भेजा था, गे बन के आ गया। सो दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड एंड फनी ऑल्सो। मेंटालिटी। सो या पेरेंट्स और अपने खुद सेल्फ एक्सेप्टेंस इज मस्ट। मैम जैसे पेरेंट्स हैं, एंड प्लस आई रेड इट इन योर बुक आल्सो दैट द हर टीना's पेरेंट्स वर कंजर्वेटिव। तो या ये चीज थोड़ा सा बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट नेचर शायद टीना ने अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस नहीं किया, इतना ज्यादा इमोशनली वो हरास होती थी। और सेकेंडली जैसे बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, तो आई फील कि स्कूल्स में भी टीचर्स को भी आई थिंक ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए इन सब टॉपिक्स में बच्चों से। लाइक यू शुड वी शुड बी ओपन, लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल आर आल्सो देयर इन सोसाइटी, एंड लाइक थोड़ा सा उसको क्रिएटिव वे में बच्चों को थोड़ा सा ग्रेसफुली उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके कि these type of people are there and they are not different from us and they should be accepted by the society. So या like वेरी ट्रू। what is like what do you think what should be the role of like teachers or like education institutions? Like I don't think so right now also, like people in India we are talking about these kind of issues in schools. uh, देखिए, सेंसिटाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, लाइक mhm. टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स नीड्स। सो सेंसिटाइजेशन तो होना चाहिए, लाइक स्कूल्स में स्पेशली, जैसे आप कह सकते हैं हाई स्कूल्स होते हैं, जैसे 10th 11th 12th के जो बच्चे होते हैं, जो इतने उनका माइंड इतना होता है डेवलप कि दे कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, Right, right. राइट। सो सेंसिटाइजेशन के स्टडीज लेक्चर्स ऐसा होना चाहिए, सो दैट Yes, बच्चों को भी ये, बहुत से बच्चे उन बच्चों में से भी ऐसे होंगे जो ऐसे होंगे, सो दे कैन right, right, ऑल्सो रिकॉग्नाइज देमसेल्फ कि ओके right. वी आर लाइक दैट और हम लोग नॉर्मल हैं। सो Mm-hmm. इस पे लेक्चर्स होना, इसके लिए अवेयरनेस कर, मतलब क्रिएट करना, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। इससे क्या होगा Right. कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी फॉर्मेशन होता है। आप अपने बच्चों को, जैसे आजकल, जैसे हम गिविंग एग्जांपल, सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में Mm-hmm. दी जाती है ना, लाइक वी इनवाइट Right, right, डॉक्टर्स, वी इनवाइट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, यू नो, right, right. उन बच्चे को, ताकि दे शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग। तो सेम Mm-hmm. व्हेन यू टॉक अबाउट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, अगर कोई भी चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उसकी Right. प्रॉपर नॉलेज और अवेयरनेस अगर बच्चों को Yeah. एट द राइट एज दी जाती Right, है, right. तो वो एक नेचुरल एक्सेप्टेंस आता है उसके प्रति। फिर वो चाहे कोई Yes, भी ma'am. सोशल टैबू हो, स्टिग्मा हो, या कोई भी कम्युनिटी हो, राइट। सो Yes, दैट right. यही बच्चे कल को जाके, यही यूथ जो है आगे चल के, जनरेशन इसी से ही बनती है, राइट। हमारे लीडर्स Right. यहीं से क्रिएट होते हैं। तो अगर Yes. टीचर्स हैं वो स्कूल में करें, पेरेंट्स हैं वो घर पे करें, एंड मिलके कोलैबोरेशन में भी अगर टीचर्स पेरेंट्स के साथ करते हैं, तो दैट वुड बी अ बिगर थिंग। आई मीन दैट Yes, कुड yes. क्रिएट मिरेकल्स। या
बिकॉज मैम मैंने ये चीज देखी भी है कि अभी तो जैसे बच्चों के पास बहुत एक्सेस है इंटरनेट की, दे हैव देयर पर्सनल फोन्स, दे हैव देयर लैपटॉप्स। सो अब मुझे लगता है कि इफ काउंसलिंग इज नॉट गिवन, लाइक इफ दिस टॉपिक इज नॉट लाइक इज नॉट टेकन इन स्कूल्स, तो वो क्या करेंगे कि दे विल स्टार्ट लुकिंग इनटू मोबाइल फोन्स फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स, एंड दैट कैन लीड देम इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन ऑल्सो। तो अगर यही चीज उसको ग्रेसफुली ली जाए और अवेयरनेस क्रिएट की जाए पेरेंट्स के थ्रू एंड स्कूल्स के थ्रू, तो दैट विल बी रियली ग्रेट। और मैम मैं ये भी चीज डिस्कस करना चाहती कि जैसे हम लोग ही अगर थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वी टेक टाइम, लॉट ऑफ टाइम टू कम आउट फ्रॉम इट। तो अभी जैसे आप थोड़ा सा शेयर कर सकती है दैट यू हैव रिटन अ बुक ऑन टीना, शी इज बाइसेक्सुअल, तो उस कितना उसको मेंटली मतलब कितना ज्यादा दीज काइंड ऑफ पीपल गो थ्रू कि पूरा टाइम वही चीज सोचना कि कैसे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, और जैसे पीपल विल लाफ अगर मैं अपनी आइडेंटिटी अगर ओपन करूं। तो इस चीज को लेके थोड़ा सा मैं चाह रही थी आप डिस्कस करें। देखिए कोई भी अगर हम टीना की बात करते हैं, जो टीना की स्टोरी जो उन्होंने मुझे बताई और जो मैंने लिखी भी है, एक ना कांस्टेंट फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। राइट ऐसे राइट। लोग उस दे लिव अंडर अ कांस्टेंट फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक हम्म। है, वेयर आई मीन जहां भी डर है वहां ग्रोथ नहीं पॉसिबल है। ठीक हम्म। है, वहां आप जॉयफुली, तो मैंने वर्ड यूज करूंगी, मतलब आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से, मतलब आपका अपना एग्जिस्टेंस इस स्टेक पे लगा हुआ है। यू राइट आर राइट। नॉट यू आर नॉट मतलब आप श्योर ही नहीं हो कि मैं क्या हूँ, यू नो। क्या? यू आर लुकिंग फॉर योर वेयर आई एम बिलोंग राइट। टू, मैं कहाँ को बिलोंग करती हूँ, यू नो। जैसे कहते हैं ना, वेयर आई एम प्लांटेड, एम आई गोइंग टू ब्लॉसम देयर, जहां मैं प्लांटेड हूँ। इफ आई एम ए बाइसेक्सुअल, एम आई गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो मुझे मुझे किस किस चीज को फेस करना पड़ेगा, पेरेंट्स को फेस करना पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल में पता लगेगा तो वो कैसे मुझे ट्रीट करेंगे, यू नो। राइट। सो एंड एट द एज ऑफ टीना, जब उनको मतलब जब कंफर्म हो गया था कि शी इज ए बाइसेक्सुअल, तो लाइफ में आप क्या करते हो, टू गेट एक्सेप्टेंस यू स्टार्ट पिकिंग रॉन्ग चॉइसेस, यू राइट नो। राइट। जहां कहीं आपको थोड़ा सा, यू बिकम सो वल्नरेबल, आप इतनी इजिली पिकअप बन जाते हो, किसी के लिए भी इजिली अवेलेबल हो जाते हो, बिकॉज आपको कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, ओके दैट पर्सन हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी। बट फॉर यू, मी, राइट। आप श्योर नहीं हो वो सॉफ्ट कॉर्नर वो आपको कोई डार्क पिट में डालने वाला है या आपके अच्छे के लिए ही है। सो राइट। इस तरह के केसेस आपको इस कम्युनिटी में, आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। उनके उस डर की वजह से वो ना तो किसी के साथ मतलब एक फ्रीडम ही नहीं है उनको ना, कि फ्रीडम किसके नहीं, साथ फ्रेंडली नहीं हो बैठ पाते। सकते हैं, यू नो। यस यस। यू आर नॉट फ्री टू किसी के साथ घूमने के लिए, उठने बैठने के लिए। आपके अंदर एक हिडन सबकॉन्शियस माइंड में वो डर आपके साथ पैरेलल चलता है कि ओके आई एम दिस, एक्चुअल में मैं तो ये हूँ, बट आई एम प्रेजेंटिंग दिस। बट वो आपके साथ साथ पैरेलल जो एक डर चलता है, वो आपको कहीं भी इन लाइफ को एंजॉय नहीं करने देता। राइट तो राइट। टीना का सेम आपने पढ़ा होगा, उसका सेम यही डर था, लाइक जिसकी वजह से उसने लाइफ में बहुत सी रॉन्ग चॉइसेस भी पिक की, रॉन्ग जो चॉइसेस थी। जिसकी वजह से शी हैज टू सफर अ लॉट, राइट। राइट राइट। एंड जब उसने बताया भी तो देखिए एकदम से इमीडिएट रिस्पॉन्स भी एकदम से पॉजिटिव नहीं था, ऑल्दो टाइम लगा। बट इफ शी वुड हैव टेकन अ लिटिल करेज टू टेल इट एट द अर्लियर स्टेज, तो अर्लियर माइट स्टेज। बी वो काफी चीजों से सेव हो And सकती her थी, आई husband थिंक। also, like her husband is also very supportive, as it is mentioned in the या book also. But या like many times, like she's lucky that finally she got like such a supportive partner. But many times ऐसा हो सकता है कि वो चीज ना मिले तो कितना ज्यादा a person has to go through, मतलब कितना डिप्रेशन, अगर अगर किसी को जैसे पार्टनर को पता चलता है कि बाइसेक्सुअल है, इट्स नॉट ऑलवेज कि जैसे टीना के हस्बैंड का रिएक्शन हुआ वैसा ही मिले। जैसे अभी हम लोग सोसाइटी में ही देख रहे हैं कि girl has to marry a boy only, then it is highlighted. But if like two girls are getting married or boys are getting married, so it is highlighted a lot, especially in Indian society. So it's still, ma'am, like what should be done? What can we like do uh, to like देखिए create a अगर
if you are talking about कि if you just take an example कि अगर टीना का husband supportive नहीं होता, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, हो कह सकता है, होता होगा, I mean, so क्या होता है, आप फिर अगेन आप एक इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हो, वो ये और भी ज्यादा आपको हार्मफुल होता है, बिकॉज आपने एक रिलेशनशिप में फिर से इन्वेस्ट कर दिया है जहां से आप फिर वही डर सामने आ जाता है कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया एंड यू वेंट इनटू इमोशनल टर्मोइल अगेन. सो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप थोड़ी सी एक क्लिनिकल हेल्प होती है जैसे साइको काउंसलिंग्स होती हैं, इफ यू गो टू ए काउंसलर, बिकॉज आप इतने ज्यादा उस वक्त फ्रेजाइल वल्नरेबल होते हो कि आई थिंक एक कोई ऐसा इंसान जो आपको सुने, यू नीड टू बी हर्ड, यू नो, जो सुने, आपको समझे, एक कंपैशन के उससे, यू नो, कि एक आपको जजमेंटल उससे नहीं, एक कंपैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, समझे, एंड आपको ये एश्योर करे कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके. बट छुपाना इज नॉट ओके, इसको हाइड करना इज नॉट ओके, because you cannot run away from your inner self for the whole life. Yes, they are fighting inside, right? So yeah, their well-being is not for them. Yeah. Ma'am, like any message you would like to give to the LGBTQ community from your side? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं मेरे सारे सोशल मीडिया पे भी जिन लोगों को एड्रेस करती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहली बात तो आप लोग खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए. पेरेंट्स नहीं मिलता फैमिली सपोर्ट, जो कि बहुत ऑब्वियस है, नहीं मिल रहा, आज भी नहीं मिल रहा, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस ना. तो अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए जैसे भी आप हैं, चाहे आप गे हैं, लेस्बियन हैं, ट्रांसजेंडर हैं. देयर इज नथिंग एबनॉर्मल विद इट, देयर इज नथिंग वियर्ड विद दिस थिंग कि कुछ ये अजीब सी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है. कोई ये मेंटल सिकनेस नहीं है, जो बहुत लोगों को लगता है कि मेंटल सिकनेस है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है. और कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग जरूर लीजिए, हेल्प, उससे बहुत हेल्प मिलती है. कोई भी आपको ट्रॉमा है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, कोई भी डिप्रेशन हो रहा है इसकी वजह से, आप अपने आप को फिट इन नहीं मानते, अनफिट मानते हैं, सोशल मिसफिट मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर ब्रीदिंग, बिलीव मी, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बाकी सब लोग हैं. थोड़ा करेज रखिए, करेज एंड विजडम, ये दोनों चीजें अगर बैलेंस करके हम चलते हैं ना, थोड़ा साहस है, थोड़ी आप विजडम है, मतलब आराम से चीजों को ले रहे हैं. You cannot throw yourself on anybody. Okay, please accept me. टाइम अपने आप को भी दीजिए, दूसरों को भी दीजिए. यू नो, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारी सोसाइटी में. बहुत सारी, अब देखिए प्राइड मंथ होता है, प्राइड ईयर होता है, तो धीरे 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 चीजें चेंज हो रही हैं. काफी चीजें हमारी सोसाइटी से जा चुकी हैं, डॉरी जा चुकी है, जीनोसाइड का वो भी खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट. तो काफी ऐसी स्टिग्मास जो हैं, जो रॉन्ग चीजें थी, खत्म हो रही हैं. ये भी जरूर खत्म होगा, बट हाँ, स्लोली स्टेडली इट विल टेक टाइम. बी पेशेंट एंड अपने आप को संभाल के रखना बहुत जरूरी है. Thank you so much, ma'am. So, thank you for giving us this wonderful session. And I hope आपके book के through बहुत अच्छा message community में मिला है readers को. And when readers will also read, so that will also bring a change. Like small things, they bring a change. So this book, I also read, when I was reading this book, so these ideas triggered my mind also. So I was thinking in this direction. तो वो होता है जब हम लोग बुक्स रीड करते हैं, तो बुक्स आर द बेस्ट मीडियम्स टू क्रिएट अवेयरनेस. तो दिस इज अ वंडरफुल बुक. And just one last question, what is your how will you address the upcoming budding writers? I also write short stories, I write related to the real life observations. So what is your message to upcoming writers? Follow your heart, go by your heart. Whatever you feel right in your heart, you should write about it. And never compare your writing. If somebody has already written, your writing style is unique because you are unique. So if you want to write, you should write. So follow your heart and pen it down. Whatever thoughts आपके दिमाग में आ रहे हैं, just pen it down. And leave rest it to pen अपने आप it starts
moving. Once we just take a copy and pen, then Yeah, the thoughts come to mind and the hand starts moving. yeah, yeah, I yeah. feel that when you are just listening to the heart and you are writing it down, you pen down, तो वो चीज नहीं होती कि what kind of language you have to use. Just write it in simple language, but whatever you want to express or you feel, it comes out. या बिकॉज आप कभी आप नहीं जानते क्या कि कौन सी लाइन कौन सा वर्ड आपका एक लिखा हुआ किसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है. Right, सो right. वर्ड दैट सो इम्पैक्टफुल. सो लिखिए, जिसको लिखना है जरूर लिखिए और दिल की सुनिए. आई ऑलवेज गो बाय गट इंस्टिंक्ट. सो मेरा यही सबको ऑथर्स को जो बिगिनर्स हैं कि Yes. फॉलो योर हार्ट एंड पेन इट डाउन. Okay, yes, ma'am. Thank you so much. It was lovely knowing you, meeting you. And I'm following you also on Instagram. Thank you for addressing us. Thank you so much. And Thank you so thank much, you. Shikha. Yeah, thank you once again, the Great Indian Book Tour, also for arranging such a wonderful session with Sunaina, ma'am. So, ma'am, all the best for your other books also. Will be Thank definitely. you so much. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye.